we are going to discuss page number 3 of chapter 13, synthesis of sentences. Practice paper 13, this is that we are going to solve today. In practice paper 13, question number 4, a passage given. Okay. In that passage, I have not uploaded passage here. You can read the passage from your book, because if I'm going to read and explain, that video will be very longer. So here question number 4, that is based on the passage. According to that, the first question is given that for each word given below, choose the correct meaning. Let us see what is the first word. The first word is receded. Line number 1, it is given receded. So receded means, see, option number D is correct, withdrew. Okay, option number D is the answer, withdrew. Okay, receded. Now second question, that is second question is handicap. Second is handicap. So handicap is what? Option B, drawback. Then the third is monotonous. Line number 19, it is given. What is monotonous? Monotonous is boring. Okay. Next question. Answer the following question. Question number 1. How did the narrator get his strange job? ठीक है, तो देखते हैं. Being literate, the narrator got his strange job of accompanying a rich but illiterate merchant on his election campaign to read and write for him. So ये उसका strange job था. Describe briefly what the author had to do to earn his salary. So the author had to accompany Lala Munshi Ram to the outskirts of village, note down the points for his speeches, and prepare a list of his supporters and opponents. Number C. What was the reaction of the children towards the narrator? So the children's reaction towards the narrator was one of wonder. Mothers would tell their children to talk to the narrator, and the children would often peep through the window and giggle at him hysterically. Now D. Which point of the speech of Lala Munshi Ram moved the villagers to support him? So the point in the speech that moved the villagers to support Lala Munshi Ram was the one in which he promised prosperity to the laborers. Number E. How did the narrator's aunt and grandmother differently react to his succeed written? Check the question from your book. Now answer is the author aunts become more friendly towards him, and his grandmother thought that he had performed a miracle by earning so much money. क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपके बुक में बॉक्सेस बने होंगे, उसी के बेस पे आपको ये आंसर करने हैं भाई. ठीक है, तो क्या है? इन नॉट मोर देन 50 words state the narrator's experience at his first job. So the author had to accompany a rich illiterate merchant on his election campaign, prepare notes for him, and make a list of his supporters. He was bored as he met the same people at the same locations. He lost his job when his employers lost the election. Question number 5 देखेंगे. Fill in each of the numbered blanks with the correct form of the word given in bracket, that is bracket. ठीक है. Do not copy the passage but write the correct serial order. देखिए, ये हमेशा की तरह यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है आपको, जो यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं ना, जैसे मैं बताऊँ, आस्क, दूसरा है कंटेन, फिर फोल्ड. ओके, फिर यहाँ पे फोर्थ देखिएगा क्या दिया हुआ है. देन यहाँ पे 5 टेल, 6 कीप, 7 हेल्ड और 8th एक्सपीरियंस. तो इसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. आई विल गो फॉर द आंसर्स नाउ. पहला देखेंगे गेव, दूसरा कंटेनिंग, थर्ड है फोल्डेड, फोर्थ फेस्ड,
Fifth is tell. Five, 6 is will keep. 7 would help. And the last is to experience. इसके बाद देखिए fill in the blanks with the appropriate word. तो देखिए इसमें क्या करना है. You must not be slaves. You must not be slaves क्या हो जाएगा to anybody. ठीक है. दूसरा है there is a great demand for Indian seeds. ठीक है. आगे क्या आपको द worried मदर सैट डिसाइड कर दीजिए. ठीक है, डिसाइड कर दीजिए. फिर आगे का जो आंसर है देखिए क्या दिया हुआ है. अरुण वन मस्ट नॉट प्रॉफिट फ्रॉम कर दीजिए. ठीक है, फिर जो है वो नंबर ई देखेंगे. अरुण वॉकड एट. ओके, माय पेन इज लॉस्ट, सो लेट अस गो फॉर आंसर हियर. ई देखेंगे, ई इज़ ऑफ. देन एफ अप लगा लीजिए. देन जी इज़ डाउन और एच जो है वो वेदर. इसके साथ ही हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला पार्ट जो है वो join the following sentences to make one complete sentence without using and but. तो पहले तो मैं पेंसिल ले लूँ अपना, तब उसके बाद ये एक्सप्लेन करूँ आपको. ठीक है, तो मेरा पेंसिल रहा ये. पहला आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है पुल द चेन द ट्रेन विल स्टॉप. तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है. ऑन पुलिंग ऑफ चेन द ट्रेन विल स्टॉप. ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है. ही इज़ बोल्ड ही कैन फेस एनी प्रॉब्लम. He is bold enough to face any problem. D. Number 3, he has not done his homework. I am sure of it. So I was sure that he has not done of his homework. We went to the airport by taxi. We did not want to miss the flight. So option A. We went to the airport by taxi as we did not want to miss the flight. ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. Rewrite the following sentences according to the instruction given after each. Change the necessary changes or do not change the meaning और choose the correct option. तो हमेशा की तरह इसके बाद ये आपको दे रखा है. अभी देखेंगे क्या है. What will be the outcome of such a disastrous plan? Mr. Gupta asked himself. Begin with wonder. So option C देखेंगे. Mr. Gupta wondered what would be the outcome of such disastrous plan. Do you mean to go abroad? Use intention. ठीक है, तो इंटेंशन में देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. डू यू हैव द इंटेंशन ऑफ गोइंग एब्रॉड. ठीक है. नंबर 3, इट इज़ अ गुड हैबिट टू मेंटेन अ डायरी. यूज एंड करना है गुड हैबिट से, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. मेंटेनिंग अ डायरी इज़ अ गुड हैबिट. फिर नंबर 4 देखेंगे. ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स रेगुलरली अनलेस. यूज़ करना है, सो पहला ऑप्शन है. He will not succeed unless he work regularly. ठीक है.
पाँचवा देखेंगे, वाई डोंट यू मीट टू मी डिस्कस द पॉइंट बिगेन आई सजेस्ट से करना है, इसका आंसर बी है, आई सजेस्ट यू मीट मी टू डिस्कस द पॉइंट। नंबर 6, क्रॉसिंग द रेलवे लाइन टू गेट द स्टेशन इन डेंजरस, बिगेन विद इट से करना है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ डेंजरस टू क्रॉस द रेलवे लाइन्स टू गेट द स्टेशन। ही इज़ नॉट ओनली चीटेड मी बट ऑल्सो स्टोल माई वैलेट, इन एडिशन से बिगन करना है। ऑप्शन बी, इन एडिशन टू चीटिंग मी ही स्टोल माई वैलेट। ठीक है, आठवां देखिए, ही इज़ इन्वाइटिंग ईच ऑफ हिज फ्रेंड, बिगन विद ईच। ऑप्शन नंबर क्या था, रुके लेट मी चेक, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ईच ऑफ हिज फ्रेंड इज़ बीइंग इनवाइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस पेपर 13 ख़त्म हो रहा है। चैप्टर नंबर 13 इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।